Hello, everyone. Finally, after a very long time, I've gotten online, and I was not in the hiding. I wouldn't say that. I was traveling. I was like 2 months away. And do you think that I did not go? Okay, wait. I have Hindi speaking people also, so I have to speak in both languages. Wait, I have to get used to it because 2 months I've been only talking to people in English. So it comes very naturally. तो बहुत घूमने के बाद दिमाग में ये विचार जरूर आता है कि सेंटर अभी खोला, काम क्या होगा, काम कुछ हो नहीं रहा, एंड पैसों का क्या होगा। सो पैसा जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कमोडिटी भी नहीं कह सकते, आइटम है हमारी लाइफ का, राइट। पैसा नहीं है तो खुशी नहीं है, पैसा नहीं है तो बहुत सारी चीजें आप नहीं कर सकते। एंड पैसा इज लाइक एवरीथिंग, राइट। हमारे सोचने का ढंग, सोचने का नजरिया वहां से आता है जहाँ पे हमारा पैसे के साथ हमारा क्या रिश्ता है। तो मनी वर्कबुक जहाँ पे हम कहते हैं, मैं बहुत पहले यही जब 1-2 क्लासेस एक्सेस के करने के बाद मैंने ये सुनना शुरू किया था, पर मैंने 3 साल तक मनी वर्कबुक को हाथ नहीं लगाया था कि मुझे लगता था इसमें क्या है, ऐसा क्या ही हो जाएगा। पैसे तो ये फाउंडेशन कर लिया हमने, बहुत सारी और क्लासेस कर लिया तो उसमें से सीखने को मिल जाएगा, और मिला भी, मैं ये नहीं कहती हूँ, लेकिन उसमें से अप्लाई कुछ भी नहीं किया था, राइट। वो जो मनी वर्कबुक, मैंने पहला मनी वर्कबुक किसी ने मुझे 3 घंटे में सिखा दिया था कि इसमें ये है, ओके। मैंने उसमें से लेकिन 1-2 चीजें अप्लाई करना शुरू किया, उसके बाद मैंने वापस मुड़ के कभी भी नहीं देखा कि मेरा जीवन में पैसे की कोई कमी रही हो। वो जब मैंने एक्सेस की जर्नी शुरुआत की थी 10 साल पहले, तो मेरे पास घूमने के पैसे नहीं थे, और 10 साल के अंदर मैं यूएसए घूम के आई। सो मतलब आप ये सोच सकते हो ग्राफ जो है यूएस, क्योंकि मुझे देखना था कि मैं कहाँ पैदा हुई हूँ, यूएसए में हुई थी वैसे। सो अच्छा है मेरे माँ बाप मुझे इंडिया ले आए वैसे। बट एनीवे, हमारे मनी वर्कबुक के बारे में हम बात करते हैं। सो मनी वर्कबुक के कुछ सवाल हैं। What is money to you, right? What does it mean to you? What does it feel like? What does it taste like? And now you'll be wondering इससे लेना देना क्या है। पर when जैसे वो धीरे धीरे वो बुक फैसिलिटेट करते हैं हम, जब एक क्लास में आते हैं अदरवाइज, तो आपको समझ में आता है कि क्या उसके साथ आपके लाइफ में चीजें बदलती जाती है, आपका देखने का, सोचने का, समझने का नजरिया जो है वो बदलना शुरू हो जाता है। ये मनी वर्कबुक का जो है बाय प्रोडक्ट या रिजल्ट जो हम लोग देखते हैं। कितने लोग हैं जो रिजेक्ट कर देते हैं क्लासेस को कि इससे रिजल्ट नहीं मिला तो ये बेकार है, मेरे काम का नहीं है। वेल, वो चीज आपको इसमें महसूस नहीं होगी, बिकॉज मनी वर्कबुक के साथ आपके बहुत सटल फाइन जो हमारे पॉइंट्स ऑफ व्यूज हैं, जो फंसे हुए हैं, जो आपको समझ नहीं आ रहा है, वो समझने को मिलता है। And I personally, I enjoy money workbook and advanced money workbook because they are amazing and they have shifted my reality. And I feel that if my reality can change so much, why not yours? हाँ, unless आप चूज नहीं कर रहे हो। अब वो बेसिक क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल नो कि चूज करना किसे कहते हैं, राइट। दैट वाज माय क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट 2-3 years. व्हाट डू यू मीन बाय चूजिंग? व्हाइल आई वाज चूजिंग, मैं चूज कर रही थी पर मुझे पता नहीं था उसको चॉइस कहते हैं, राइट। सो हियर गैरी के का जो फर्स्ट इंट्रो पेज है, अगर हम मनी वर्कबुक इसके लिए, क्योंकि आपको लेना पड़ेगा, ऑनलाइन डाउनलोड कर लो या जैसे भी है, सो यू विल गेट टू नो कि वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में है, मनी वर्कबुक के बारे में। सो वो ये बोलते हैं कि अगर आपने ये 100 टाइम्स अगर आपने ये वर्कबुक कर ली, एक बार आपको फैसिलिटेट होने की जरूरत है, बाकी यू कैन डू इट योरसेल्फ। इफ यू डू दिस 100 times, your money reality will never be the same for all eternity. Do you get what that means? What kind of a contribution can this book be to you, right? So I'm searching for the book myself because maybe book center pe hai and I have the online download for it. Wait, hang a sec. So I just wanted to read a few portions of that and kind of discuss it with you, that what does it truly mean. Wait, anybody has a question on money? By the way, I will do a few clearings also on money because मेरे जो सारे जिंदगी के टूल्स है ना, वो मैंने पिछले 2 महीने की अपनी ट्रिप में लगा दिए, ऐसा मुझे लगता है।
मेरी पूरी एक्सेस जो है मेरे सामने आके खड़ी हुई थी, एंड एक पल के लिए तो लगा शायद कुछ काम नहीं करता है, ये भी एक्सपीरियंस हो सकता है आपको। लेकिन वही मोमेंट पे वापस जब हम एक्सेस जाते हैं तो वो कम बैक टाइम जो है वो आपका बहुत रिड्यूस हो जाता है व्हेन यू डू एक्सेस की क्लासेस। ओके, so even ये it has been pretty challenging. 2 months living out of your suitcase has been quite a journey for me. Okay, so how everything is so intimidating because आप अपने करेंसी में नहीं स्पेंड कर रहे हो, आप दूसरे करेंसी में स्पेंड कर रहे हो, राइट? सो इट चेंजेस योर पर्सपेक्टिव ऑन मनी। और एक टाइम के बाद तो आप भूल जाते हो कि आपको कन्वर्ट भी करना है, जा रहा है, ओके फाइन, बाद में देख लेंगे, राइट? यू विल कम टू दैट स्पेस ऑल्सो। Ankita is asking, doing it 100 times means no. It is those 13 questions. You can read the book and do it. You can you know, you will have an idea of doing it again and again and again. वो questions के जो answers लिखते हैं ना, वही 100 times. Yeah, you read it and you don't get it. That's the reason. Basic जब मैंने खुद से पढ़ना शुरू किया था तो मैं सो जाती थी first page के आगे, मैं नहीं पढ़ी हूँ. But when I got facilitated with it, then everything changed. Just a second. Yeah. So that is what I meant by getting it facilitated. Yes, Juhi, what's your question? So what is happening from few days? Everything is finalized. Client is saying, yes, I want to do healing, I want to do sessions. And at last moment, it's getting cancelled. I'm using questions, I'm using tools. And can you be in a can you please mute yourself, people? Can you be in a question rather than going into a conclusion? Or फिर cancel हो गया. Okay, Yeah. we love to go into a conclusion, and big five जो है हमको पकड़ के वहीं लाके खड़ा कर देता है. That ask the question, did I charge too less or did I charge? I mean, don't go for the more thing because you're charging whatever you're charging. What if you did not have to go into wrongness? आप अगर अपनी दुकान चला रहे हो, आपके दुकान पे और आपकी जैसे 10 एक दुकानें हैं, आपकी दुकान पे कोई भाव पता करके गया और वापस नहीं आया, are you going to get upset about it? No. Then why are you getting upset about it? Yes. So it's simple, right? हमारे पास कितने लोग हैं? How many of you guys are bars facilitators out here? There could be many. You don't have to say yes, yes, yes. I know, right? How many people will come to you and ask you and say, "Aap hi se karna, you are the ultimate," and then they will never show up. Have you ever experienced that? Some of you, maybe sometime. Or they will say कि मेरे को session लेना है आपसे, and they will never show their faces again. Have you seen that? Ever? That is what I'm saying. What if you did not have to make that significant कि लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं, पर कर रहे कुछ नहीं है, right? But wrongness आ जाती है. क्यों? That's the whole thing. That's the whole thing. वो जो हमारी 13-14 calls की जो journey है, वो यही आपका breakdown करेगी point of view that you don't have to go into the wrongness of anything. Not you. आप अगर अपनी दुकान चला रहे हो, आप गलती में जाओगे कि मैं सही प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूँ, इसीलिए वो मेरे से नहीं खरीदा और उसने दूसरी दुकान में जाके खरीदा. Do you get कि एक कस्टमर बिहेवियर भी होता है? यूएसए में नहीं खरीदा, यहाँ पे आके खरीदा. कितने लोग हैं वहां के डॉक्टर्स के पास, लोग नहीं जाते, यहाँ पे आके अपने सर्जरीज कराते. So everything that brings up that every time that you hold on to the big five for and you consider yourself as wrong for people not showing up or people asking you and then not showing up, will you please just try and uncreate it now? Yes. Right, wrong, good, bad, for client, short boys, for fads and beyonds. So Deepika is saying, yes, no one yet signed up for all the workshops I have announced, including the free intro. What if you recognize that you don't have to do any more free intros? तुम्हें पता है फ्री की चीज कोई नहीं आके लेता है, और आते हैं तो सब टाइम पास करके निकल जाते हैं, right? What if you could put a nominal cost for the free intro? Why are we dependent on others to make such sources of money? Yeah, but then are you okay to do a job? कितने लोग हैं वो जॉब में खुश नहीं है और अपना करना चाहते हैं, right? That is what I'm saying. What if you did not have to make other people significant? आपके घर में जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, उनको 1 सेकंड का डर नहीं लगता है. They don't have the money, but they will not tolerate it also, and they will just leave the job, and उनको यकीन है कि उनको दूसरी नौकरी मिल जाएगी.
right? And doing your own thing, can you be a good employer to yourself? Everything that doesn't allow you to be a good employer to your own self, will you destroy and uncreate it now? Right, wrong, good, bad, for client, short, boys, provides, and beyond. So all I'm saying is, what if you did not have to make yourself wrong for that? We as an employer start judging ourselves, and we hate ourselves so much, and then we hate the money also that we can get from any of the sources, and you will not allow yourself to have ease with money. We have pain with money. We don't have love for money. Trust me. इतना दर्द है हमारा, दुख रहा है मेरा भी. किसका दर्द है यहाँ पे, बताओ मुझे. ये दर्द कहाँ से आ रहा है? पैसे के साथ घबराहट होती है, पैसे के साथ डर लगता है, पैसे के साथ गिल्ट आता है, पैसे के साथ ब्यूटीफुल डिस्ट्रैक्टर इम्प्लांट्स दैट वी हैव लिस्टेड, वो सब ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं आते हैं. आपके एडिक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू आ जाते हैं उसमें कि वो मेरे को स्पेंड करना ही है. यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ऐसे हैं जो स्पेंड करना ही चाहते हैं, और addictive points of view की spend करना ही नहीं है, whatever, okay, that's up to you. So all your shiku implants and explants that are holding all your interesting points of view with the money, all the fixed points of view for not having money, all the big five that doesn't allow you to have that money and ease with money, will you please revoke, recant, resend, reclaim, renounce it down, destroy and uncreate it all. Right, wrong, good, bad, for line shorts, boys for bads and beyonds. Ankita, did your question get addressed? And so I was, okay, cool. I would like to bring your attention to the fact that there is a relationship that we have with everything around us. We are not being present with it, right? Money is yet another thing, which is important, but we have made it important. What if it's not? What if you recognize that you are the source of everything? Thank you, Miss. What if you recognize you are the source of everything? What would that create? Right? Yeah, but yeah. So how much money do you spend on other people and not feel bad or guilty? But when you have to spend on yourself, you feel terrible. Right? How many? Anyone? Everything that I brought up, can we just try and create that you don't think that you're the most important person in your own life, and there you go, you find it bad, or you feel guilty about spending, lots of guilt, right? And don't worry, was I there too? Yes, I'm not saying I was okay and you guys are like rubbish, okay? I'm not saying that. I'm saying I went through it. I used to have so much massive, I'm spending on my child, बच्चे पे खर्च करना was absolutely okay, but spending on myself was terrible. Like, फिर बीच में phase आया कि मैं खुद पे खर्च कर सकती थी, but when I would spend on, I would do either or universe. या तो मैं access कर सकती हूँ, या मैं अच्छे वाले कपड़े ले सकती हूँ, या तो मैं access कर सकती हूँ, या मैं अच्छा वाला बैग उठा सकती हूँ. Do you get it? Do you do that? या तो ये या तो वो, ये पैसे मैं उसके लिए बचा लेती हूँ. या तो मैं ये लूंगी या तो मैं ज्वेलरी लूंगी, दोनों नहीं आ सकते. तो हम कितनी ब्यूटीफुली अपने आप को लिमिट करते चले जाते अपनी चीजों के साथ कि क्या हम ले सकते क्या नहीं ले सकते हैं. So Nisha is writing, I went for shopping yesterday and I have fever since then. So how much anger do you have with money for spending it on yourself, right? So everything that is, will you now, and are you now ready for letting that go? Please, from all dimensions of time and space, for all the fixed points of view, all the points of view people have, all the projections they have about money, and how recession is setting in, how you cannot spend more money, how access has increased its prices, you know, loot rahe hai, whatever that is, everything that is, we just try and create it now. Right, wrong, good, bad, for line, short, boys, for bad news. If you were running a business and your business demanded कि आपको लोग निकालने हैं और अपना product का price high करना है, would you not do that? If you were truly being in business, what if you did not have to feel sorry about what's going on and how it has to go on? That, I mean, just asking. वो points of view जो अटका के रख रहे हैं ना, आपको फंसा के रख रहे हैं पैसे के बारे में, वो उसमें से आप ईज में आ जाओगे, वो रिलैक्स हो जाएंगे.
That is what this thing does. So गैरी डगलस ने ये किताब को चैनल किया है. ओके, चैनलिंग मतलब उन्होंने डाउनलोड किया है, ये उनको इन्फॉर्मेशन आई है तभी उन्होंने ये चीज बनाया है. एंड एक्सेस सिर्फ आपको एम्पावर करेगा, प्रैक्टिकल बनाएगा चीजों के साथ, क्योंकि हम इमोशंस के साथ पैसों को देख रहे हैं. ओके, और कैसी वाली इमोशंस, वो तो हर एक की बहुत अलग अलग प्रकार की इमोशंस है यहाँ पे. व्हाट इफ यू अलाउ योरसेल्फ टू हैव दैट practicality, pragmatism with money. Okay, practically if I were to see this, अगर मान लो आपकी मेड जो है बोलती है कि आप उसको 5,000 दे रहे हो, वो बोले ना मैं तो 20,000 में आऊंगी, would you really have her? You may. It depends now. Is that really going to create a future that you're looking out for? There are some people you would want to retain and you don't mind paying, but there are some people you can say, hey, you know what, I'll get someone better than you in a lesser cost. That's your business, that you're going to be deciding. Then बाकी सारी जगहों पे हम कहाँ से वो घबरा जाते हैं और सारी चीज करते हैं. Yes, Tavleen, yeah, you need to hear this, that you're running a business. Are you ready to be in business? What kind of business are you running? Your life is business. Simon says that if there's blood running through your veins, you are in business. Your life is your business, right? So it's all about awareness. Kitna awareness hai, and how willing are you to be aware in your life? Are you willing to be? Right? Only you know what's right for you. तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या नहीं है. कोई और तुमको कैसे बता रहा है कि तुम कितना सही हो कितना नहीं हो, राइट? तो ये किताब जो है आपको फैसिलिटेट करेगा वो सारे पागलपन वाले इनसेन लिमिटेड पॉइंट्स ऑफ व्यू से आगे जाने के लिए. क्या? एंड that those you have created around money, currency flows, having more ease, having a beautiful fun-filled life. बहुत लोग तो इसी में रिजेक्ट कर देते, तुम कर सकते हो, हमसे नहीं हो पाएगा. Everything that is can be destroyed and create. Right, wrong, good, bad, powerful, blind, short, boys, provides and beyond. And swear, I used to think मुझसे नहीं हो पाएगा, but I still got into it and I'm still doing it. Right, prices and access are rising and brought up this energy for me to be worth of my time. Yeah. So I see access little bit भी चखा हो और आपकी जिंदगी में हल्का फुल्का भी बदलाव आया हो, या आपको हल्कापन महसूस किया हो आपने, या आपको ईज आ गया हो, कुछ भी नहीं मिला आज तक, छोड़ दो, मत करो, निकलो, मत आना के ये फ्री के कॉल्स भी क्यों करने के और बी क्लासेस में क्यों पैसे डालने के जब कुछ मिला ही नहीं है. बट पहला मोमेंट जब आपको लगा कि कुछ तो बदला है, तो हर एक एक्सेस की क्लास जो है वो बदलती जरूर है कुछ ना कुछ. अब वो बदलाव को हम किस तरह से देखते हैं कि वो हमको ऐसा लगता है, हम कंक्लूजन पे बहुत जल्दी जाते हैं. कोई एक अवेयरनेस आती है, अवेयरनेस तो आई पहले नहीं, उसके पहले हमारे कंक्लूजन जुड़ जाते हैं उसके साथ, राइट? परसीव किया नहीं कि पहले ही हम कूद जाते हैं कंक्लूजन पे. ये वो फिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के कंक्लूजन से जो डर हमको बैठाया गया है, हवा बनाया हुआ है पैसे को, उसको क्लियर करने के लिए ये वाली क्लास है, राइट? I've gained a lot, but I'm stuck with the point of view that access classes are very expensive for people. And पहले just वो point of view, Deepika, just get that fucking point of view out of your fucking reality. क्योंकि हम सोचेंगे महंगा तो आप चीज बेच ही नहीं पाओगे भाई. अगर दुकानदार ये बोलेगा मैडम जी मत खरीदना बड़ा महंगा है ये प्रोडक्ट, तो बेच पाएगा क्या वो? पहला अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करो. So but not able to choose greater for me for the very first time. Oh yeah, that's okay. That's okay. First time for everything. So a lot of people save money for the future, spend on me. I'm insecure for my future. Insecurity comes when you're not taking your relevant actions that are required to be taken in the now, because future will be created by your current choices that you're making. And Tavleen, yeah, unapologetically raising prices like a badass. Of course. Yes, Rashmi. Yeah, hi. Hi. So I have this insecurity with borrowing money. Okay. I've never borrowed money all my life. So Yeah. मुझे है कि जितना है उसमें जितना मैं कर सकती हूँ
Like borrowing is a It's no a no. bad thing. I know, really bad. I know. Loan भी नहीं लेना चाहिए तुम्हें बैंक से. बहुत गलत बात है. Yeah. And every lifetime that you had borrowed money and you were killed or you were slaughtered or you couldn't pay back and that you brought your family on the road that you felt responsible for, will you please evoke, recant, rescind, reclaim, renounce, destroy, and uncreate it now? Right, wrong, good, bad, powerful, line, shores, boys, provides, and beyonds. What are your interesting points of view about borrowing? What is borrowing to you? Borrowing के, what does borrowing mean? First, one word. क्या आता है? You fear that you will not be able to pay back? Yeah, so yeah, that pressure कि वापस दे पाऊंगी या नहीं, कब दे नहीं, पाऊंगी. आप क्या काम करते हो वैसे? I'm a designer. I have हाँ, my. आप बिल्कुल वापस नहीं कर पाओगे. आपके कपड़े कभी भी बिकेंगे नहीं और कोई खरीदने नहीं वाला है. आप बिल्कुल मतलब आप कंगाल हो जाओगे क्योंकि आपने बोरो किया. Everything that is fully destroyed and create, right, wrong, good, bad, powerful, line, short, boys, provides, and beyond. Yeah, all those things that have been told to you, and where is it coming from? No, it's not that I've been told by, I guess, On the bachpan. contrary, I've seen my life when I borrowed for certain classes. Within a month, I created more than ever, and I repaid, and So I obviously had more for that. Yeah. I have started doing that. Yet somehow, like, and जैसे when I borrow, I have it कि okay, 1 महीने में 2 महीने में ये वापस कर दूंगी, but वो हो नहीं पाता है. And और borrow करने का वो हिम्मत नहीं आती है. मतलब नहीं, I हिम्मत भी की मैंने second Are time you की. talking about your husband? No, just asking. Is it from borrowing from parents or husband? No, Achha, no. from outside. Yeah. Yeah. So I'm still not comfortable with it, though I have started it. I've stepped out. I have made that choice. I've started it, though it was very, very uncomfortable. But abhi tak, I'm not comfortable with it. So I want some tools or, how can I go around it? So, see, my point is this money workbook does cover your debts because this is a debt reality you're creating that मेरे को वापस करने पर वापस नहीं हो रहे but अभी और चाहिए. So these are called past expenses, which is the chapter in the money workbook. So Yes. as we go along, there are a lot of things. And what if you did not see? My point is, are you willing to pay? Do you have a desire of repaying? Sorry. Do you have a Do you desire? have a desire of paying it back to them? Yes, of course. Yeah. So if that is the case, then anything that you earn, can you keep 10% aside as a way of paying it to them? And then when that becomes a sizable chunk, you can give it to them. So I've already started tiding 10%, but what tiding then does not go for. No, not your 10%, not your 10%, additional 10%. So suppose you're earning 10,000. So 10% of that is your honoring. Another 10% for paying past expenses. And if you're running a business, another 10%. So I was next coming to that. Ever since I've started tiding, so मेरा tiding amount बढ़ता जा रहा है, but cash जो मुझे हाथ में चाहिए to make the payments, वो नहीं हो पा रहा है. So I'm all the more. So what else is possible that I haven't yet considered in going out and creating more money? Okay. So you use your creativity and start doing something more. What are the other revenue streams that you haven't considered? So what will happen is, आप क्या कर रहे हो कि बड़ा temptation होता है वो 10% को देखने का, यार पैसे तो काफी हो गए उसमें, I wish मैं ये use कर लूँ. So now instead of looking there, what if you did not have to look at all and you say, okay, now what else can I do? मेरे हाथ tight पड़ रहे हैं या crunch हो रहा है. Okay, how can I increase this pool? And how can I grow onto this? Okay, इसको मैं कैसे बड़ा कर सकती हूँ? वो इसमें आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा. So any tool or something you can share with me which I can use every day, which will help me to become that energy? Or creating more and Of not looking at your 10%. Yeah, and not feeling insecure about borrowing, the overall scenario. See, insecurity is all about every way you're not trusting yourself. So every way I'm doubting myself, which means all my
Shiku implants of doubt, I destroy and uncreate. So everywhere I do not trust myself, I destroy and uncreate. Right? Because insecurity के नीचे क्या है? एक यकीन है कि ये मेरे साथ खराब हो जाएगा. Right? And yeah, so Sonia's writing that she's done money workbook a couple of times and there's been a massive shift in her reality. So, and she's been from a place where she did not have money for bars. She's done SOP today. And she's not yet earning. So much has shifted for her. Okay. So because the entire journey you're getting facilitated for those 10, 13 days, 10 or 13 days, depends. Right. So everywhere you are, and whose insecurities are you buying into? Can you return it to sender? Yes. And keep doing that because they're not yours. If you could trust yourself and your designs and your creativity, would you have to bother about the money part or be insecure that I am not talented enough, I will not be able to create enough? जब हमारे को अपने skill पे भरोसा है ना, तो फिर anything is possible. So everywhere I'm not trusting myself is what is coming for you right now. Thank you. And of course, keep returning it to sender because there's no new tool. And money workbook could change it. And I feel that's more or less like a guarantee that money workbook ke baad, unless you do not want to make that change and do anything and take action, or then it may get a little difficult. But otherwise, I would suggest that money workbook is very important. Money workbook already 4 times. You've done it 4 times and something has shifted or nothing has shifted. Yes. So borrowing for me was a big no. Big no, yeah. Stepped out and started doing that. And yeah, so jo money. So for a tool that you're asking, for the tool, just open the money workbook and whatever opens for you on that day, just start doing that. Okay, you will know. Because instead of tools are the same, I can give you the tools, but you already know it, is what I would say. So you and clearing jo bhi humne kiya hai, all the big 5 that doesn't allow you to have ease with money, will you just run and create it now? Yes. Right. So on the contrary, I would want to even do a clearing. Everything that you've defined that money is, but that isn't, will you just run and create it now? Right, wrong, good, bad, perfect, line, short, boys, provides, and beyond. Yes. So that's about it. That's all. Everything that you have decided that money is, that it isn't. Everything that you've decided that isn't, that is. Okay. Everything money is to everybody else. That is an actualization, an avoidance, a fulfillment, or a perfection of the big 5. And all of the big 5 you have regarding money, and all the zero sum of money you have that you have bought, and that isn't actually true for you, will you please just try and uncreate it now times a godzillion? I talk about bad, perfect, line, short, boys, for bad, and beyond. Thank you so much for all You're most welcome. You're most welcome. Yes, so Sonia's writing, the energies with this book come alive and with the consciousness of the facilitator. So you have to experience it, it to shift whatever you're doing. So yes, it does shift. I can acknowledge that. Thank you, Sonia. I've done money workbook just a week back, and I'm yet to experience the shift. See, one more thing, please, people. वो हमें ऐसे लगता है ना shift ऐसा होगा कुछ दिखाई देने लग जाएगा, नहीं वो shift नहीं होता है. What if it's already changed? You are that change and now you can't see it, but you're still searching for it. कहाँ देखना है? What if the things have already shifted and you haven't yet been able to acknowledge it? Yes, Ushma. So Kavita, I feel कि after so many years of being a housewife, when you start earning, तो घर के लोगों को थोड़ी insecurity हो जाती है कि अभी तो ये खुद कमाने लगी है. तो उस condition में like then you stop getting clients, and so everywhere you're doing the zero sum of money, the zero sum of money game. So what happens is कि कोई और नहीं चाहता है तो मैं अपना earning बंद कर दूं. That's a game that is going on, right? So all the zero sum of money. Consciously you are not thinking like that, but but somewhere I feel कि energetically it might be affecting. Yes. So everywhere that you are trying to still, do you like to please people? Push करना चाहते हो लोगों को? Yeah, everything that is. Can we just try and uncreate it now?
right, wrong, Yes. good, bad, perfect, line, short, boys, providing joy. Just because दूसरा नहीं कर पा रहे तो मैं भी और अपने आप को डाउन कर देती हूँ, उसको बुरा लग जाएगा। वो होता है ना कि छोटे बच्चों को खिलाने के लिए हम उनसे हारना शुरू कर देते हैं, फिर जब हम हारते नहीं है तो उनको और बुरा लग जाता है, तो तुम उनको खुश करने के लिए अपने आप को हराना शुरू करते हो। दैट्स विद किड्स, बट टेक्निकली इफ यू लुक एट इट, आपके जितने आसपास करीबी लोग हैं उनके साथ भी आप वही कर रहे हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से हमने अपने माँ बाप से या किसी से सीखा है, वो पैटर्न हमारा अंदर फिटेड है। ओके, एंड बिकॉज हम उनकी इनसिक्योरिटी को परसीव कर पा रहे हैं और हम शांति मेंटेन करना चाहते हैं घर के अंदर, तो हम नहीं करते हैं। वो ताने भी देंगे आपको, हाँ अब तो पैसे कमाने लग गए हो, अब हमारी क्या जरूरत है, राइट, एंड व्हाटएवर, एंड यू लाइक नो 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 बट आई रियली रियली नीड यू, एंड फैक्ट इज यू डोंट नीड देम, you don't need them, but they want to make you lesser, so you will give up money in order to have people in your life. Everything that is will you destroy and create it now, right, wrong, good, bad, perfect, line, short, boy, provides and beyond. Yes. So there are too Thank many you. people will take over that space, and you wouldn't have that space, and you wouldn't know how to kind of have ease with money during this entire So, thing. is it so that consciously you are not like wanting to do that, but अभी जैसे ये क्लास शुरू हुई तो मुझे ऐसे स्ट्राइक हुआ कि शायद उसकी वजह से भी हो सकता है करके। No, consciously you're not doing it, but you know there is an energy to it. अवेयरनेस तो है ना कि क्यों हाँ। हम कर रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, राइट। आई नो ऑफ पीपल जिसकी फैमिली बहुत अच्छे से कमा, मतलब वेल सेट है, बट बच्चा इतना काम नहीं कर रहा है, एक्सेस में आके कमाने लग जाते हैं, बट पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक्सेस क्या ही कर लेगा, ऐसे थोड़ा ना दुनिया चलती है, ऐसे थोड़ा ना ये होता है। आई एम अ क्लासिक एग्जाम्पल की जिसको ये कहा गया था, बिकॉज माई फैमिली आई हैव डॉक्टर्स एंड एवरीवन, तो ये गलत कर रहे हो तुम, हीलिंग तो भगवान की देन होती है, उसके लिए पैसे नहीं चार्ज करने चाहिए। मैं हाँ, फकीर बन जाओ, सेम। बन जाओ, मस्जिद पे जाके बैठ के सबके ऊपर फूको, फकीर लोग यही करते हैं, उनके अंदर बहुत पावर होती है। तो बट द होल थिंग इज आप हीलिंग का बिजनेस चला रहे हो, जैसे डॉक्टर जो है वो भी एक हीलर है इन अ वे, और वो भी अपनी दुकान चला रहा है, राइट। वो बोलेगा लोगों की, और ऐसे डॉक्टर हैं जो फ्री का इलाज ही करते हैं, पर वो 2 टाइम शायद उसमें से 1 टाइम नहीं खाते होंगे, तो या तो उसमें खुशी मना लो कि मैंने किया और मुझे खुशी मिल रही है इससे, और मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। रबड़ की चप्पल में और खादी के कपड़ों में जीना सीख लो, नो प्रॉब्लम, वो कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग वो बैड है, नो 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 नो, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग वो गलत है, वो भी एक चॉइस है ना, कि मुझे लोगों को खुश करना है और मुझे उनके लिए ये करना है, और मैं उसके लिए मेरी जान भी चली जाए, आई एम ओके विद दैट। ऑप्शन बी, here there could be multiple options, but an option B could be, hey you know मैंने टाइम दिया, मैं और ऐसे भी लोग होंगे जिनको आपने हील किया और वो वापस मुड़ के भी नहीं देखेंगे, आपको बोलेंगे कुछ नहीं हुआ, मैंने खुद से किया है, और बुरा लगता है। वो बुरा ना लगे, उससे बेटर एक पैसे ले लो, फिर वो जितना उनको बुरा लगाना है या जो भी है वो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी भी सेहत उतनी ही जरूरी है ना। तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं वो एक चॉइस है पैसा चार्ज करने का, उनको अच्छा लगाने के लिए आप पैसे छोड़ दोगे, या लोगों को अच्छा नहीं लग रहा कि आप पैसे कमा रहे हो तो आप पैसे छोड़ दोगे। So everywhere you're trying to please people, and on a continuous basis, can you please destroy and uncreate it now? Yes. Right, wrong, good, bad, perfect, line, short, boys, provides and beyond. Thank you for asking that question, Ushma. काफी लोग स्माइल कर रहे थे आपके। Thank you. Thank you. So Thank you for clearing out that. you're most welcome. तो ये किताब में सिर्फ पैसे के बारे में बात नहीं होती है, आपके रिश्तों के बारे में, आपके बॉडी के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आप जहां अटके हो उसके बारे में। हम अभी इतनी देर में इतना ही बात कर सकते हैं। आप सोचो किताब जब होगी तो उसको कैसे हम फैसिलिटेट करेंगे, पर चैप्टर वाइज आपको और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और क्योंकि 50 रुपए की जो कमाता है उसके लिए 50 रुपए की प्रॉब्लम हो या 5 करोड़ की प्रॉब्लम हो, पैसे के साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम सबकी सेम है, राइट। किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, दैट्स द ओनली डिफरेंस, राइट। तो सो गैरी यहाँ पे ये बोल रहे हैं आपको अपने पेपर पेन पेंसिल जो भी लेके बैठने हैं,
वो हम क्लास जब कल से, क्योंकि ये मेन क्लास जो है वो कल से शुरू हो रही है, यू विल हैव टू नोट इट डाउन। चाहे, और खुद से सच बोलना है, इट्स नॉट अबाउट मुझसे सच बोलना है। मुझसे आप झूठ भी बोल दोगे मेरे को चलेगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, पर खुद से 100% सच बोलना है कि आपको क्या लगता है इस चीज के बारे में। जो या जब आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, जो सोनिया भी लिख रही है, आपके शिफ्ट कहीं से भी आ सकते हैं। और आपने क्या डिफाइन किया है कि पैसा क्या होता है? आपको पता है देयर इज वन गर्ल जिसको बाहर जाना था और उसके पास पैसे नहीं थे, तो ये किताब करते करते उसको उसके कजन ब्रदर ने बोला तू आ जा, मैं तेरे को पैसे देता हूँ, मैं तेरी टिकट बुक कर दे। तो धीरे धीरे उसका ऑलमोस्ट सारा जो ट्रिप है वो फ्री का हो गया, क्योंकि किसी ने टिकट दे दी, किसी ने कुछ दे दिया। मैं खुद का अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने चित्रलेखा मिसेस गुजरात 2016 में किया था। ओके, तो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग बड़े जोरदार कपड़े, जूते, मेकअप, मेरे पास कुछ नहीं था वो टाइम पे ऑनेस्टली। और उस साल मैंने जीता भी वो प्राइज और मुझे मिला यूरोप का ट्रिप। ओके, तो मैंने ये बोला कि मेरे पास अभी ट्रिप पे जाने के लिए भी एडिशनल खर्चे के पैसे नहीं थे, उतने नहीं थे। आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड, मेरे को थोड़ा ना पता था कि मैं जीतने वाली हूँ। तो यूरोप खर्चा, कुछ खाना पीना, एवरीथिंग इंक्लूसिव, तो भी आपको कुछ तो एडिशनल लेके जाओगे कि नहीं खुद का, वो नहीं था वो 2016 में। मैंने जीतने के हिसाब से नहीं पार्टिसिपेट किया था। राइट नाउ मेरे कपड़े, मेरे जूते, सारी चीजें धीरे धीरे करके मेरे को लोग ऐसे मिल गए जिन्होंने अपना निकाल के मेरे को दे दिया कि तुम जाओ करो, कोई बात नहीं, भी आप विद यू। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने रेड कार्पेट बिछाया हुआ है, सब लोग दे ही जा रहे हैं जिसको आ रहा है। मुश्किल से मात्र 10,000 शायद खर्च किया होगा मैंने, क्योंकि अंडरगारमेंट्स और थोड़ा मेकअप लेना था, तो वो तो खुद कर ही सकते थे, उतनी भी बुरी हालत नहीं थी मेरी। सो मेन चीज था रिसीविंग के लिए आप कितना तैयार हो। तो वो अगर मेरे को कपड़े खरीदने होते, पहली बात है खरीदे या हायर नहीं होते वो कपड़े, इस तरह के कपड़े जो फैशन शो या ऐसी जगहों पे लिए जाते हैं, तो वो मिला तो उसका ग्रेटिट्यूड, क्योंकि वो भी पैसा है अगर आपको लग रहा है। राइट, आपने वो क्रिएट किया है, वो कोई किस्मत की वजह से नहीं आ रहा है। आपने बोला, इधर उधर बात किया और मांगने गए, वो मना कर सकते हैं, पर उसने सामने से बोला कि तुम मेरे पास आ जाना, इसका क्या चिंता करती है। आई सेड, और मैं वो मेरी फ्रेंड नहीं है, नॉन फ्रेंडली जोन पे भी अगर आपको चीजें मिल सकती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिएटिंग मनी। मैं बोल सकती थी कि नहीं किसी और के, उसने पहने भी नहीं है वो कपड़े क्योंकि वो बहुत मोटी है। उसने बोला कि मैं जिस दिन पतली हो जाऊंगी मैंने तब के लिए रखे हैं, पर वो डबल एक्सएल, और मतलब वो साइज उसका मीडियम वाला उसने लेके रखा होता। सोच में आता है तो पतले होंगे, तो खैर आज भी नहीं हुए पतली, बट मैंने वो कपड़े पहने। सो माय पॉइंट इज कि आपकी रिसीविंग ओवर होनी चाहिए ना, पैसे से कुछ लेना देना नहीं है, आपका कितना ओपन रिसीविंग है उस पे मैटर करता है। सो आप कहीं जाते हो और वहां पेमेंट, पार्किंग की पेमेंट नहीं कोई लेता है और आपको फ्री की पार्किंग मिल जाती है, दैट्स आल्सो कॉल्ड मेकिंग मनी। छोटा छोटा, इट्स लाइक बहुत इररिलेवेंट शायद लगेगा एग्जांपल, बट छोटा छोटा चीजें हैं। यही चीज आपको अगर फॉरेन कंट्री में पेड पार्किंग में करनी हो ना तो लगती है चोट। यहाँ पे 50-60 रुपए की है, वहां पे वही चीज जो है ना अच्छा खासा पाउंड वगैरह में लग जाता है या डॉलर्स में लग जाता है, राइट, एक एक घंटे का। तो पर फ्री पार्किंग मिल जाती है, यू लाइक वाओ, हाउ डज इट गेट बेटर देन दैट? दैट्स लाइक लिटिल एक्नॉलेजमेंट ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स, दैट्स क्रिएटिंग मनी। आपकी एनर्जी की वजह से, वो किसी और को भी मिल सकता था लेकिन आपको मिल रहा है, तो एक्नॉलेज। दोस्त आप पे निछावर करना चाहते हैं पैसे, रिसीव, ये सोच के थोड़ा ना कि मैं इसको वापस कैसे करूंगी, ये फेवर या ये जो प्यार है, प्यार को वापस कर सकते हो, प्यार को प्यार से वापस कर सकते हो, दैट्स यू डू। इट्स नॉट, व्हाट इफ इट्स नॉट अबाउट मनी, दैट यू आर मेकिंग इट अबाउट मनी। यस रितेशा। अभी जब आप रिसीविंग वाला पॉइंट बोल रहे थे तो सबसे पहले यही आया माइंड में कि रिसीविंग का ही तो मेजर इशू है, बिकॉज सिंस चाइल्डहुड यू हैव बीन ऑलवेज टोल्ड बेटा बाहर से कहीं से नहीं लेते हैं, अच्छा बिना बताए कभी नहीं लेते हैं, अच्छा 5 रुपए भी अगर मिले पड़े हुए तो उसको उठा के पेरेंट्स को देते हैं। सो यू नो यू हैव बीन नहीं, मंदिर में कंडीशन्ड रखते हैं तो पेरेंट को टू देते नॉट हैं। रिसीव। मैं बहुत करप्ट इंसान हूँ रितेशा उस हिसाब से, क्योंकि मेरे को तो बचपन में आई वाज 6 इयर्स ऑफ एज और मजदूर का वॉलेट, हमको वहां पे कोई काम हो रहा था, मजदूर का वॉलेट मिला था, बहुत पैसे थे उसमें, 10-10 रुपए वाले।
अब मुझे व्हेन आई वाज 6 1986 में मुझे पता नहीं थी वैल्यू क्या है, पर मैंने और मेरा एक दोस्त था रिकी, मैं हम दोनों ने बांट लिए। हमने क्या खरीदा, च्युइंगम खरीदी, बहुत सारी च्युइंगम खरीदी। फिर मेरी मम्मी ने कहा ये कहाँ से आए, तो मैंने बता दिया, बेटा वहां वापस रख के आओ। मैं कब, पैसे तो खत्म, वापस क्या रखे, वॉलेट वापस रख दिया हमने। आई मीन दैट्स ओके, मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि मैंने लिया। तो एवरीथिंग दैट इज दैट तुम्हें ऐसा लगता है कि ये चोरी है, ये अलग चीज है, गलत चीज है, विल यू प्लीज डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट इट नाउ। क्योंकि वो वहां पे था, हमारी नजर पड़ी, हमने उठा लिया, मेरा हो गया हो। उसको अपने पैसे को मतलब क्या कहते हैं, सेफ रखना चाहिए था ना, वो उसको प्रेजेंट होना चाहिए था अपने पैसे के साथ। मेरी जिम्मेदारी तो नहीं थी वो, राइट। हाँ, व्हाट यू आर सेइंग, बचपन में हमारी रिसीविंग बंद कर दी जाती है, इसीलिए हम ये क्लासेस भी कर रहे हैं, ताकि थोड़ी थोड़ी करके वो रिसीविंग ओपन हो जाए। चाहो तो इमीडिएटली ओपन हो सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। या वी आर कंडीशन, एक्सेस वो चेंज आपके अंदर लाता है कि मांगो, मांगना। और बहुत लोग मांगते ही नहीं है, तो रिसीविंग तो बहुत दूर की बात है। मांगोगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो दूसरी जगह जाके मांगोगे। जब तुम छोटे बच्चे थे तो हमें पता था कहाँ जाके हमको मांगना है, और अगर वो नहीं देता था तो भी हमें बैकअप पता था कि कैसे मांगना है और कितनी देर तक दहाड़ना है ना। वहीं लेट जाएंगे, रोते रहेंगे ताकि हमको चीजें मिल जाए। तो अब क्यों नहीं, गलत। कितने लोग हैं जो तुमको जज करेंगे, ओह माय गॉड वित्तिशा यू सो अटेंशन अब हम अडल्ट्स हो गए, अडल्ट्स थोड़ी मांगते हैं, बच्चों की तरह मांगा मत करो। आई नो व्हाट एन अटेंशन सीकर यू आर, तुम तो I हमेशा know, रोती right? रहती हो। हमेशा या रोती रहती हो, आई नो, सो मेरे पास एवरीथिंग दैट आके इज, मत रोया करो। हाँ, everything that is, will you destroy and create, right, wrong, good, bad, powerful, Yes. blind, choice, boys को बाद में। तो जहाँ जो सुन सकता है तुम्हारा रोना और शायद उसका मेल्ट हो जाए, वहां पे जाके रोना है। तो स्मार्टनेस तो हमारे अंदर है कि कहाँ से मिलेगा, राइट। सो वो हमारे अंदर ऑलरेडी ये सारी चीजें हैं। why would you not acknowledge that you know it, where and how to have it? if you, अगर तुम वाइफ हो, बीवी हो, तुम्हें पता है कैसे लेना है, पर तुम्हें शर्म आती है या तो मांगने में। पति पड़ोसी का है, यहाँ तो पड़ोसी के पति से भी मांग लेते हैं, तुम अपने पति से नहीं मांग पाते यार। व्हाट इज ऑल ऑफ दिस, राइट। माँ बाप तुम्हारे खुद के, Kavita, कभी जब this मांगना time होता I है। came home. हाँ, अभी I'm at home. I came home and I asked my dad. या देखो ये कितने पैसे आपके चाहिए और पर्सनल फादर है चाहिए। भाई, हाँ आपके भाई। पर्सनल फादर है And he's आपके। like, मुझे मैं मंथली खर्चा देता हूँ उसमें कर लो, एक बार देख लो। नहीं, वो तो अब हो गई, उसके ये अलावा मुझे चाहिए। That is that. या wow, so that is it, that's the shift that we're talking about. Yeah, and that is a shift which I did not have before this. Yeah. Before the workbook. So Deepika is saying I have shared. So what if it's not just Gary हमेशा बोलते हैं कि सिर्फ पोस्टर डालने से लोग नहीं आएंगे। प्लीज रिकॉग्नाइज दैट, मैंने पोस्ट डाला और लोग नहीं आए। आपको शायद कभी कभी लोगों को साथ फोन उठा के बात करने की भी जरूरत है। और ये बात नहीं करो कि आप मेरे क्लास ज्वाइन करो, कि जनरल भी बात कर सकते हो। तो वो कितनी शिफ्ट्स हैं जो ये सोनिया भी बोल रही है कि आप रेजिस्ट कर रहे हो। कहाँ आप वहीं पे चूज कर रहे हो रहना, और क्यों चूज नहीं कर रहे हो उससे आगे बढ़ना। यस दीपिका, ओपन अप। Yeah, hi. So हाय, I have also spoken to people. I called up people. People did show some interest, but the dates didn't work or the time didn't दैट्स work with ओके, one or एंड दैट्स ओके, चेंज इट। ओके, maybe what is the class asking for? तो ये क्या होती है, क्लास की एक एनर्जी होती है। maybe it's not looking right now, could I rework the dates and change it and keep, see, आपकी दुकान आपने खोली, कोई नहीं आया, आप दुकान बंद कर दोगे? so I am continuing, but I am in this question only, what else is needed? And first of all, drop your point of view कि एक्सेस की क्लास बड़ी महंगी है, कोई नहीं खरीदेगा। See, you laugh. You have to first work on your point of view. Yeah. ठीक है, वो क्योंकि जैसे ही आप बोलोगे किसी को ये प्राइस है, आपका जरा सा भी अटकेगा, people will get to know that something is not okay, right? बड़े naturally बोल दो, it's only for this much, like बड़े casual तरीके से आपने बोल दिया as if it's like a very daily thing, and इसमें बड़ी क्या बात है। जस्ट आपकी जिंदगी का प्राइस है यार, ये लाखों की इंश्योरेंस ले लोगे तुम अपने लिए, ये चीज जो है तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है।
फ्रीडम दे सके, फ्रीडम फ्रीडम के गान गाते हैं हम, हाँ, एंड फ्रीडम जब मिल रही है तो लेने नहीं आते हो। आई मीन सॉरी, गाली नहीं लगाई मैं, गाली से ऐसे लगा गान, सॉरी, आई एम सो सॉरी, गाने गाते रहते हैं, गाने, सॉरी। Yeah, no, I it's thought right. you got it correct, right? I just Yeah, thought I some got it people got correct. it But I have not differently. been even able to speak to my brother. Like today, I was speaking to him like I need share in the property or I need share in the income that comes from our property. I have not been able to say, and whenever I've said, it's kind of just stuck there, and I've never got a response. That because सामने से तुम्हें क्या चाहिए वो तुम सीधा बोले नहीं पा रहे हो, right? That is there. उसी चीज को तो हमको क्लियर करना है. You've done a money workbook ever? I've done. I've finished. I finished reading also yesterday, and I did full 10 sessions on money workbook. Then And and still despite that, you have. today, So what is stopping you? Can you book a, like, you know, really one session? Don't come for the class जो कल से है, but one session will you can book it separately, and I can work on you that कहाँ से बोला नहीं जा रहा है. Because मैंने because I did this with property and everything. Today my brothers are not my brothers anymore, so I've lost them, but that's okay, you know. Yeah, I'm very free and very happy with that if they are not there, because मैं अब किसी को जबरदस्ती please करने में interested भी नहीं हूँ. yeah, that's So the only fear that I have, that he'll get angry. let And him, but it's your हक है भाई. उसके गुस्से में अपने हक को छोड़ दोगे तुम? yeah, Are you willing to I've not lose been it? able to overcome that fear of, that he'll be upset and he'll be But angry. what about you then? Are you getting upset and angry on yourself? I'm trying to let go of it. Like But there yeah, will be you other you're the sources also. महान surrender की देवी बनना है. Okay, very good. I bless you. I bless you. Everything that is, can we destroy and uncreate? Yes. Good, bad, powerful, line, short, boys together. Why do you want to become a devi in this? No, I've been just asking if the universe can show me other sources of income They instead of right, just but me. what is so where you can have it with ease, you wouldn't. But it's not coming with ease. Now that's the whole thing. But That you it's are stopping and blocking it from having ease with this, right? So yeah. if you can, yeah, do contact. I think this can be cleared. All your interesting points of view regarding having your own money, inheritance money, will you just try and create that? Right, wrong, good, bad, Yeah. powerful, line, short, boy, value. So who are you trying to save here? Because that's a part of Big Five, Deepika. Who are you trying to save here? Fifth I'm also element is thinking about that I saving. wasn't there with my parents in their last days. It was my brother who cared for them throughout. So And he's the one who cares for you're the property as well, not me. so I've been away. so So now, so all your justifications, can you yeah. just run and create? Yeah. You can ask a portion of it. You don't have to ask the entire thing, right? You're just asking a Yeah. little portion of it. That will help you. Yeah. So everywhere you're not creating your own money because you think that you could have the inheritance money, but you won't let yourself have the inheritance money. Will you destroy and uncreate it now? Yes. Right, wrong, good, bad, powerful, line, short, boys, provides and beyond. Thank मतलब you. उस हिसाब से दीपिका, अगर 3 बच्चे हैं उसमें से एक बेटे ने या एक बेटी ने माँ और बाप का ध्यान दिया है, तो बाकी बीच वाले को तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए, वो तो बाहर था. That's what you're saying? Are you saying that? I mean, that's what I feel, that if I didn't care for Is that them, I making wasn't sense? there for them. Is that making sense? वो शायद आप दूर रहते थे, आपके पास आ ही नहीं सकते थे. Whatever their concern was or their agenda was of staying with someone but not with you, does that take the right away from you? Do you know your rights? Yeah, it doesn't. But yeah, Mm-hmm. so there's this guilt also, and then there's the fear also. So then that, if you've done 10 sessions of money work, but clear your guilt or your anger or your whatever emotions with money. That's all you need to do. Yeah. Thank you. Thank you. You're welcome. Yes, Ritisha, last question. No, I was just discussing about the class thing that you said now. Sometimes we launch the class, but it doesn't, happen. मतलब वो class कुछ time पे नहीं होती है. So why does it happens? Like कई बार मैंने ये चीज notice करी है कि जिस दिन की मैंने workshop डाली है, उस दिन तक कोई client नहीं आएगा. After 10 days, people start coming to me. Okay, आपने उस दिन वो workshop डाली थी ना, can we still attend it?
So, I mean, Yeah, sure. Why not? When do you think? But I need an advance for it. Can you pay the advance right now? Why would you no, think कि वो दिन पे नहीं आया? वो तो अब मेरे तो गए काम से. You but see, my question is कि ऐसा like why this happens? Like, there is no is it our own why. blockage? Why is not a great question to ask at all, ever. Why and how? Terrible questions to ask. Instead, you simply say, okay, what was the class asking for? There is an energy to the class. When would the class like to be created? Rather than saying, oh, I think ये मेरे लिए सबसे convenient date है. But class के लिए, what if you did not have to, go by what you think is convenient? Can you look at when the class wants to show up for itself? We can ask from the class also. Like, Yes, you have to. when you I want mean, to it'll get be great if created. you ask the class when would it like to show up. This, you think our classes don't get cancelled just because we are CF? We do. We don't talk about it, but we do. We cancel it. Or we postpone it sometimes. Do you think Shannon doesn't postpone it? Do you think Simon का तबीयत बहुत खराब हो गया तो cancel नहीं होता? Things happen, yeah. What are you talking? Okay, यहाँ पे ना एक छोटा judgment आ जाता है. छोटा After ही है? posting, हाँ, छोटा ही है. After posting, when you repost the time, so you know there is a fear कि लोग judge करेंगे. इसकी तो class postpone हो जाती है. I mean, you know. हाँ, yeah. So what if you can claim it? I like changing time. I like changing my classes, and what's wrong with it? What if that could be fun? My money workbook timings have shifted and changed always. I'm like, yeah, this kind of looks like a time. And then when the group is on, can we please do it later? Yeah, okay, let's do it. If it works, why not? But if it doesn't work, then also you can play around with it and say, hey, you know what? It'll be nice if you can join my class at this hour. तो इसमें गलत कहाँ है? इसकी change होती रहती है. See, the more judgment you get, the more money you make. You're avoiding judgment. And then you're defending that judgment, which is keeping you stuck. So everywhere you're avoiding and defending judgments, will you destroy and uncreate, right? Wrong, good, bad, thoughtful, client, short, boys, provide me. The big five is a new element which has been added with NG is in Access. There was big four, then now it's the big five. Big five is where you being the savior of humanity. You're trying to save people, save things, savior is what you're being. हम ज्यादा चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि बेचारा दे नहीं पाएगा. बेचारा मतलब आप उनको बचा रहे हो, राइट? सो बचाने के चक्कर में आप उनसे मांग ही नहीं रहे हो. So you're trying to save them. So everything is will you just try and create right, wrong, good, bad, thoughtful, client, short, boys, bad, yes. So that's it. That I would like to say. So छोटा सा था ना ये. तो ये जो छोटा सा शर्मनाक चीज जो तुमको लगती है कि मैंने डेट और टाइम चेंज कर दिया, can you keep playfully keep changing it? Or don't put the same post, put a new post, a new date, or a new class. So let people think तुम्हारी एक नहीं 10 classes हो रही है. Why do you have to say I am sorry? ये क्लास ये हुई नहीं, तो अब हम इसको चेंज कर रहे हैं. तुम्हें इतनी डिटेल देने की क्या चुल मच रही है? Put another post, another day, another time. Because when they see a new date, na, so they say, how unprofessional. Who मतलब, says? But why? No, don't change it on the same poster then if you have that kind of a thing. Make a new poster. तुम्हारे बड़े पैसे लग रहे पोस्टर बनाने में जैसे. Make a new post and saying, hey, new date. Or no, don't even say new date, new class. Let people think that you did that class and now you're doing another class. Why would you want to not play with people's judgments and have fun with it? Right? Easy, right? It's not that difficult. yes, easy. Because you're still looking at log kya kahenge. And that's a big five. Big five. Everything that is will you destroy and uncreate it now. Right, wrong, good, bad, for client, short, boys, provides, and beyond. So yeah. So don't get embarrassed with anything, especially with money. Right? There's nothing embarrassing about things.
And there's nothing embarrassing even about something gross happening with you. I mean, I don't know why am I even talking about this. Yeah, I'll probably talk it off recording today because I've had an experience of something today. So we'll talk about it. But money ka ho gaya? Because वो money related नहीं है. हो गया? Any questions? Okay, cool. So this is regarding money workbook. Any one of you would be interested, or you know anyone who could be benefiting out of this, please, if you could, get them. We start our official class from tomorrow on money, because it's not just the workbook. There's way more than that. Anji, After the price raises, what are you charging for the money workbook? 15. Mine was 12,300. Now it's 15, and you can pay in installments. Cool. So because 1.5 month is what my money workbook runs. And I know what shifts you can experience, even while the class is going on. Okay? वो दौरान ही आपकी breakthroughs आना शुरू हो जाते हैं. मजा आना, at least पैसे के साथ मजा आने लगता है, पैसे की बातों के साथ मजा आने लगता है. So yeah. So that's about it. Thank you everyone for joining today. बहुत टाइम बाद आपको देखा, बहुत अच्छा लगा. मतलब नहीं भी देखा बिकॉज़ डब्बे बंद हैं आपके, पर जितनों को देखा बहुत अच्छा लगा. Thank you so What are the much. timings, Kavita? 7 p.m. 7 to 1 hour. Yeah, 1 hour. 1 hour, 1 hour, 10 minutes or so. Yeah, that's more or less twice a week. Kavita, in how many installments we can pay? You can pay in two. In special cases, 3, not more than that. 2 to 3 installments. Okay. Thank you. Thank you. Thank you so much for joining today. And it's how many days in a week? Twice. Twice a week. Yeah. Okay. So see you again. Yeah. Soon. Bye.